Good morning, ma'am. Good morning, everyone. How are you all? ये अच्छा लगेगा। Are you all fine at your home? Yes, No, ma'am. No, ma'am. What happened, Shivesh? Yes, ma'am. Oh. Okay. Shall we start now? Start करें? Yes, ma'am. Okay. Yes, Are you all ma'am. ready? Yes, Yes, ma'am. So let's start with the next chapter. The next chapter name is Separation of Substance. Separation of Okay. timetable of homework assignment. Homework. Separation of substance. Before this, I think I have given some homework to all of you. Yes, ma'am. What was that homework? Chapter number? What was the homework? Ma'am, sorry. It means no one is studying, no? No one is paying attention. Which homework I have जुड़े given? नहीं थे Number 4. Okay, क्यों जुड़े नहीं थे शिवेश? मैं फीस नहीं जमा था पापा, फिर बाद में जुड़वा थे। चलिए जुड़ गए finally. Welcome to school now. Yes, ma'am. मैम कल का होमवर्क यही था ना? रीड द चैप्टर 4. Yes, you all have read the chapter. Yes, ma'am. Okay, any problem? Any problem in that chapter? No, ma'am. No? Okay. So let's begin with this chapter, next chapter, that is separation of substance. Okay? Separation of substance. Okay? Separation means what? To separate out. अलग अलग करना. Okay? तो किसको अलग करेंगे? जो क्या होगा? Mixture होगा. So let's start with the term mixture. What is mixture then? Okay? Mixture means what? When more than two components are present together, that is what called mixture. Okay? एक से ज़्यादा चीजें जब add करते हैं, then it will form what? Mixture. Okay? Mixture. Mixture is Good morning, ma'am. it is formed of more than one component. Okay. More than one component. Mixture means what? Which is formed of more than one component. एक से ज़्यादा चीजों से जब कोई चीजें मिलके बनी है, that is what called mixture. Like lemonade, you all have tasted, I think, lemonade. Nimbu pani. Yes, ma'am. Yes. So when you are taking lemon, after lemon you need water. After water, what do you need? You need sugar. You need that? I'm sorry. Sand. Okay. So lemon, water, sugar when we are adding, then that is what called lemonade. नींबू पानी बोलते हैं, नींबू पानी. Okay. So some of them are adding a pinch of salt. You can add a pinch of salt also when there is a BP problem. Like this, you want lemon water. Either you are adding salt or you can add what? Sugar. या तो आप sugar add करिए या आप salt add कर लीजिए. As per your taste, you can add any of them. Afterward, if you want get more tastier, you can add what? Ice cube. चलिए ठंडा ठंडा लगेगा.
So these are all what? This all together forms what? A mixture. Mixture means what? More than one component are added together. More than one component are added. And फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ही चम्मच डाला आपने या 1 ही चम्मच डाला चीनी आपने. ओके, एज पर योर टेस्ट. सम ऑफ देम आर ईटिंग वेरी स्वीट थिंग्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा आप मीठा खाते हैं, वेरी स्वीट, देन यू कैन ऐड 3 or 4 spoon ऑल्सो. अगर आप हल्का मीठा खाते हैं तो यू विल ऐड व्हाट? ओनली 1 spoon. और दोज हु डोंट लाइक what sugar, they can add salt also. So as per your taste, you can increase or decrease the amount of what component here you have taken. Okay, आप चाहे तो आधा ग्लास भी नींबू पानी बना सकते हैं, आप चाहे तो 1 ग्लास भी बना सकते हैं. If you want, you can add 1 jug also. Okay, तो ऐसा मिक्सचर क्या होता है जिसमें कंपोनेंट का जो अमाउंट होता है वो फिक्स नहीं होता. ठीक है, you can increase or decrease the amount of any of the component which is utilized for making mixture. Okay, so let's take another example. Air. What is the Hindi meaning of What? Okay, next example is Hindi air. meaning of Air is a mixture of several gases. You have read in class 5th, I think. Say yes or no. Yes, ma'am. Air is a mixture of gases. Which gases are present in air? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, Nitrogen, carbon dioxide, water helium, vapor, argon, yes, here water vapor, argon, hydrogen? yes. So argon. many gases are present here. Like I'm writing hydrogen, carbon dioxide, symbols I'm writing. Okay. Then nitrogen, then oxygen, then water vapor. Okay, so these are all what? Gases which are present where? In air. तो अभी हमने मिक्सचर पढ़ा. मिक्सचर मीन्स व्हाट? अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलके बनी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मिक्सचर. ओके, और उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता. लाइक एयर में हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं एंड घटा भी सकते हैं. इफ यू विल बर्न एनीथिंग, अगर आप कुछ जलाते हैं तो क्या निकलता है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ओके, तो जिस एरिया में आपने ज्यादा कुछ जलाया है या ज्यादा पॉपुलेशन है, उस एरिया में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं है एयर का. ओके, जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पे कौन सी गैस ज्यादा होगी? ऑक्सीजन विल बी मोर. ओके, तो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. वाटर वेपर का अमाउंट इन दिस सीजन, मानसून सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in air is what? Is maximum. Okay, सबसे ज्यादा वाटर वेपर रहता है. तो वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. ओके, तो यहाँ मिक्सचर का मतलब क्या है? मोर देन वन कंपोनेंट से मिलके वो बना है एंड उसका प्रोपोर्शन क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता. ओके, फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सैंड, वाटर एंड ग्रेवल. Sand, water and gravel. What is the meaning of gravel? Anyone? Gravel? Ma'am, dish. What? Small pebbles या gravel. कंकड़ देखा है? छोटे छोटे. Small stones. Yes, ma'am. We can say. In Hindi we are using कंकड़. Okay, and we can use pebbles also. Pebbles भी use सकते हैं. If in a container you are taking what? Water you have taken. You have added what? Sand. You have added gravel. So this is what? This is a kind of, ये पूरा जो container में चीजें आ जाएंगी. This is what? A mixture in which more than one component is present. Okay, your blood which is present in your body is also a mixture. आगे जाके आप पढ़ेंगे higher classes में. Blood is what? A kind of mixture where RBC, WBC and many other components are present. Okay, water is present, then glucose is present, urea, everything, hormones, protein, these many other substances are present. So blood also is a kind of mixture. Okay, now what is the purpose of studying, for separating mixture?
पर्पस क्या है, एम क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, व्हाई वी आर स्टडिंग दैट, एनीवन, एनी क्लू रिगार्डिंग दैट? क्वेश्चन क्या है? My question question फिर से is, बोलिए। what is the purpose of separation of component from mixture? Purpose. Sometimes Protein. Purpose क्या है of sometimes separation of substance? First is what? To remove. What we have to remove? Impurities. Non-useful. thing Non-useful thing. Yes, very good. Non-useful thing. जो जरूरी है we can use, and the thing which is not, which is of no use, we use separate it out. Like which is of no use. You know, you have seen flour at your home. आटा देखा है आटा? Flour. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. flour which you are saying. Okay. In that, what, with the sieving process, you are removing what? Sieving process. चलनी पे आपने क्या निकाल लिया? The thing which is of no use. हम उसका वेस्ट मटेरियल Yes, निकाल waste दिए। material will remain on the sieve. चलनी को sieve कहते हैं. The waste material will remain on the sieve, and the useful material, that is flour, will comes down after sieving. Okay? तो क्या हुआ? Useful चीजों को हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया, और नॉन यूजफुल चीजों को अलग कर लिया. तो सेपरेशन का फर्स्ट पर्पस क्या है? प्लीज स्टॉप डिस्कसिंग in between all of you, please. Okay? To remove non-useful thing. क्या कर लिया? Useful thing और non-useful thing को क्या कर लिया? Separate out कर लिया. Next is to remove impurities. To remove impurities. What is the meaning of impurities? अशुद्धता। Yes, like see, when you are making, yes, so this is second term, making tea, example. When you are making tea, okay, so the tea which you are adding for giving color to that particular tea, the tea leaves is of what? No use. Tea leaves, जो चाय पत्ती बचती है, okay, in strainer, छन्नी को strainer बोलते हैं, strainer we used to say. So in that strainer, what will remain? Tea particle will remain in it. tea का जो particle, हाँ, tea leaves और tea particle will remain in it. And what used to come down? Tea. Tea used to what? Come down. तो जो useful चीजें हैं वो हमें क्या हो गई? Separate हो गई. और जो impurities हैं वो क्या होती हैं? अलग हो जाता है. आप चाय पत्ती तो खाते नहीं हैं? नहीं खाते ना? What do you? What is a useful product in that tea? टी है जो हम क्या डाल के बनाते हैं? दूध, पानी प्लस वाटर एंड टी लीव्स और टी. ओके, सो वी रिमूव इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं बाय सेपरेशन. थर्ड इज, थर्ड, टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट. यूजफुल component. Now what is the meaning of this? To separate useful component. So here we can take the example of what? Churning of milk. जब आप क्या करते हैं? घर पे देखा होगा, we used to churn the milk. मथनी से क्या करते हैं हम उसको? मथनी देखा है? ऐसे ऐसे करते हैं लस्सी बनाने वाली. Okay? Yes, So when ma'am. we used to churn the milk, Yes, what will ma'am. happen? जो भी मक्खन है वो ऊपर रह जाता है और जो छाछ है वो नीचे रह जाता है. तो both are useful component. Makhan also, the butter also. Okay, because from butter we used to make what? Ghee. So that also is useful, as well as the charge which we are getting. That also is what? Useful component. तो दोनों क्या है? Useful component है. पहले हो सकता है कि आपने क्या किया? Non useful को अलग कर लिया. Like इसमें example we can take of what? जब आप चावल चुनते हैं तो you used to take out what? We used to take out what? The pebbles present, the small stone. तो stone किसी use का नहीं है. Okay? तो आपने क्या कर लिया? Useful चीज को separate out कर लिया. Second example में जो impurities है आपने उसको remove किया. Impurities का example क्या होगा? Tea. Okay? So the tea, the residue which remain there,
after making the tea is of no use. तो वो impurity की form में आपने अलग कर लिया. Next is to separate useful component. अब अगर सारी चीजें उस particular container में जो रखी गई हैं वो सारी चीजें useful हैं तो how we will separate that? So like right now I'm giving example. Take a container, okay, add what we can say milk in it, and Yes, with the ma'am. help of churning इलेक्ट्रिक मशीन और या फिर वुडन का भी, लकड़ी का भी होता है, आप Yes, चर्न ma'am. करेंगे तो some butter will get collected where? In the upper part, and the lower part, what will remain there? छाछ. Okay? तो दो चीजें दोनों क्या है? यूजफुल है और दोनों ही क्या हो गई? अलग अलग हो गई. बटर क्या करता है? मिल्क पे या कर्ड पे क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है. तो we used to separate out the butter as well as we will separate this छाछ also. Okay, is it clear? Lassi, whatever Yes, you are ma'am. saying, छाछ or lassi. If you are not able to understand Yes, what is ma'am. छाछ, it means lassi. Okay, so I hope it is clear to you. Third example, to separate useful component. तो अगर सारी चीजें ही यूजफुल हैं तो दोनों को यूजफुल चीजों को कैसे सेपरेट आउट करेंगे? तो एग्जांपल इज व्हाट? चर्निंग इज द एग्जांपल which I have given for this. Okay, purpose once again I am repeating. Yes, listen. Purpose I am repeating here, to remove non-useful thing. Okay, non-useful thing. Non-useful means which is of no use. Okay, so that we have removed. Example for this. Can you give example of this? Example for the first one. Removing what? Stones from grain. From grain. Okay. Second one which I have got right now is about to remove impurities. To remove impurities, which example I have given? Tea. Ma'am, removing tea leaves from tea. Yes, very good. Removing tea leaves Now, from the tea. third one which I have written here, to separate useful component. If everything is useful, so how can we will remove it? How can we will not remove, but how can we will separate it? So with the help of which process? I'm writing here churning. C-H-U-R-N-I-N-G. Okay? With the help of With the churning help of process, churning we will process. separate out both the components so that we can use it later. Okay? So this was all about the purpose of what? Separation of substance. क्यों separate करते हैं? ताकि once again impurity को remove कर सके, जो non useful substance है उसको remove कर सके, और जो useful component है, अगर सभी useful component है तो उसको क्या कर सके हम? Separate out कर सके. Separate, Okay? yes, ma'am. Now one by one we will study the process. Okay, the process. Let's start with the first process of separation. First, the meaning of churning. चर्निंग मतलब मथना होता है. मथना, ऐसे 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 अगर आप किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो दैट प्रोसेस इज व्हाट चर्निंग. ओके, इन योर वॉशिंग मशीन आल्सो यू हैव सीन चर्निंग प्रोसेस. Yes, ma'am. ड्रायर देखा है? Yes, ma'am. यस, देयर यू ma'am. गेट. तो क्या करते हैं, इतना चर्न कर देते हैं कि उसमें से क्या होता है, सारा वाटर कपड़े से क्या हो जाता है, बाहर चला आता है. ठीक है, तो देयर आल्सो यू कैन सी इफ यू आर हैविंग वॉशिंग मशीन. Separate हो जाता है ना. Next, let's start or begin with the first topic, that is what? Hand picking. Okay, what is the name of this? Hand picking. Hand picking. Yes, very good. Hand picking. Pick means what? उठाना. किस चीज से उठाना भाई? So we used to pick with our hand. Okay, so this is a manual method. अगर आप हाथ से कर रहे हैं या पैर से कोई काम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं manually we are doing. Okay, किस चीज से करते हैं? Manual. Manual मतलब हाथ से किसी चीज को करने को क्या बोलते हैं? Manual method है. I'm writing here manual. Okay, क्योंकि ये हाथ से कर रहे हैं तो ये क्या होगा? सेकेंड, स्लो प्रोसेस होगा. तो कौन सा हैंड पिकिंग में? ओके, हैंड पिकिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि इसको हम हाथ से करते हैं. इन अ बिग प्लेट व्हाट वी यूज्ड टू टेक? ग्रेन. इन दैट ग्रेन व्हाट इज प्रेजेंट? ओके, इट कैन बी स्मॉल इंसेक्ट, इट कैन बी स्मॉल stones also. Okay, so what we used to remove from this?
We used to remove stone. हम इसमें से निकालते क्या है? Stone और insect अगर है तो insect को निकाल लेते with the help of hand. ठीक है? तो hand picking is a method where we remove generally what? The bigger particle. जो भी है उनको क्या करते हैं? हम उससे निकाल लेते हैं. ठीक है? Is it clear? ये स्लो प्रोसेस होता है. देखिए अपने घर में भी देखा होगा. You all have seen at your home also. Your mother or your grandmother is doing what? Is removing or cleaning the grain with the help of which process? Hand picking process. बहुत time taken process होता है. ठीक है? धीरे धीरे करते हैं. ध्यान से देख देख के चुनते हैं. Hand picking means what? चुनना, चावल चुनना और गेहूं चुनना, जो भी है चुन के साफ करना. मैंने भी किया है. Okay, very good. If you all are doing, then it's very good. Shivesh, are you doing this? Shivesh, Yes, ma'am. are you doing this hand picking process? Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, second tracing है. Next is what? Threshing. Yes, ma'am. What Threshing. is threshing? What is threshing? Yes, anyone? Anyone? Then process of Yes, speak up. Ma'am, the process process that is used to separate grains from stalks is called threshing. It's called threshing. I'm making here grains. Don't laugh on it. Okay. See, this is plant and this is grain I have made. Okay. तो क्या करते हैं? The process of separating grain from this stalk. ठीक है? Grain क्या हो जाए? Grain अलग हो जाए और ये plant क्या हो जाए? अलग हो जाए. ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? Threshing. The process of separating grain from what? Stalk. Suppose ये एक plant है जिसपे क्या हुआ है? ये grain हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है. तो if I'll separate grain from what? Stalk. This is what? Which process? Threshing. ठीक है? Threshing. कब ये देखने को मिलता है? जब हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, खेतों की कटाई जब की जाती है तो इस प्रोसेस को किया जाता है थ्रेशिंग. ठीक है? क्या करते हैं? जो भी ग्रेन्स हुए रहते हैं इन द फील्ड, वी यूज टू गो एंड कट दैट. ओके, एंड कटिंग ऑफ दैट प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके, यू ऑल हैव सीन आई थिंक. उसको हार्ड सरफेस पे किया जाता है किसी भी मैम हार्ड सरफेस पे. थ्रेशिंग. Yes, मैम, उससे पीटा जाता है ना. Yes, मैम, उससे पीटा जाता है किसी हार्ड सरफेस पे. Like rice, you have seen rice. वही वो बोल रहे हैं. धान को देखा होगा, क्या करते हैं? ऐसे पीटते हैं. मैम, इसे मशीन के हेल्प से भी किया जाता है. Yes. Ma'am, the third मैम, इसे मशीन के हेल्प से भी किया जाता है. Yes, it can be done with the help of machine also, okay, and with the hand also. Hand से करेंगे तो धीरे धीरे होगा, and if you will do with a machine, the work will get faster. ठीक है? Threshing process means what? Removing grain from stalk. Second process done. Now moving on to the third process. Let's see which is the third process. मैम, ये आवाज कैसा है? मैम, ये आवाज कौन सी? Third process is winnowing. Okay, winnowing, removing lighter components from heavier ones. Okay, lighter means हल्के कंपोनेंट को किससे अलग करते हैं? हैवी कंपोनेंट से हम अलग करते हैं. ठीक है? देखा है विनोइंग प्रोसेस? Yes, ma'am. A fan kind of machine Yes, you have ma'am. seen for winnowing. इसका हैंडल होता है. जब इसको चलाते हैं और इसके सामने ग्रेन को रखेंगे तो क्या होगा? जो लाइटर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे. और जो हैवियर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? वो बच जाएंगे. हाँ.
You can do at your home also. If you'll take a lighter component, भूसी ले लीजिए और grain ले लीजिए और ऐसे ऐसे करेंगे आप सूप में, जो भी कहते हैं strainer सूप में, तो what will get, what you will get to see, जो भी lighter component है, it will move away and heavier component will remain in it. होता है ना? तो removing of lighter component from the heavier ones, we are using the process that is what called winnowing. Okay, it can be done with the help of machine or a fan. Fan से भी कर सकते हैं, और it can be done with the help of what sieve, चलनी से भी कर सकते हैं. ठीक है, या आप थाली में भी लेके कर सकते हैं. As per your choice, you can do winnowing process. Lighter, ये ध्यान रखिएगा, we are separating lighter component from heavier ones. Okay, clear? Heavier component. Yes, ma'am. Understood? Winnowing. Any problem to anyone? Okay. Just like winnowing. Advantage for winnowing. Listen. Just like what? Winnowing, you will get to study which process? Sieving process. ठीक है? Constituents of a mixture. Sieving process. What is sieving? What is sieving? Ma'am, the process by which separate solid constituents of a mixture which differ in their size is called sieving. Sieving देखिए, इसमें which kind of component are present? Solid component present होते हैं, like flour, आटा and husk. ठीक है, आटे के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हस्क प्रेजेंट रहता है, भूसी प्रेजेंट रहती है. ठीक है, so with the help of sieving process, what we used to do, suppose this is sieve, small dots are there. So when you will put flour in it, what will happen? जब आप ऊपर से फ्लोर डालेंगे तो डाउन साइड फ्लोर आएगा और ऊपर क्या यहाँ पे सेटल हो जाएगा? हस्क. ओके, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सॉलिड कंपोनेंट. ओके, व्हिच आर हैविंग ऑफ व्हिच साइज? थोड़े बड़े और थोड़े छोटे हो सकते हैं. ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं? सेपरेट आउट. उनका साइज हाँ, डिफरेंट साइजेस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं. वही मैंने कहा, छोटे बड़े और थोड़े. इतना बड़ा तो होता नहीं है हस्क. Husk also is of what? Small size, as well as flour also is very what? Fine in nature. So both can be separated out with the help of this process. Okay? इन दोनों process में similarity क्या है? What is the similarity between these two processes? Winnowing and sieving. Anyone? What is the similarity between winnowing and sieving? And what is the Hindi meaning of similarities? Samanata. That also you don't know. मैम वो भी अलग ही करता है, सेपरेट ही करता है. Yes, both are used for what? Both are used for separation. दोनों ही क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं? सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे भी हमने क्या किया था? हैवी को लाइट से सेपरेट कर दिया था विनोइंग में. पंखे से करें या आप टेबल फैन से करें या हवा से करें, जिस चीज से भी करें, एयर से करें, विंड से करें, स्टॉर्म से करें, जैसे भी करें, यू आर गोइंग टू सेपरेट सब्सटेंसेस in this process. And same here also you are separating, but one winnowing में आपने किस चीज से separate किया? with the help of air you are separating. and sieving में आपने किस चीज से separate किया? with the help of sieve, जिसे आप हिंदी में चलनी कहते हैं. okay, with the help of sieve you are separating here, and with the help of air you are separating in winnowing process. दोनों ही दोनों solid के लिए, solid component के लिए हम use करते हैं, water के लिए हम use नहीं करेंगे. remember that. ओके, अब ये मत कहिएगा कि विनोइंग से हमने क्या किया? पानी को अलग कर दिया. ओके, वाटर कैन नॉट बी और लिक्विड सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ विनोइंग और बाय सीविंग. ओनली सॉलिड कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट साइज एंड वेट कैन बी सेपरेटेड बाय दीस प्रोसेस. ओके, इसमें ध्यान रखिएगा, सॉलिड कंपोनेंट, जो चीजें सॉलिड होती हैं लेकिन डिफरेंट वेट की होंगी, एक हल्की होंगी और एक क्या होंगी? एक हल्की होगी और एक
भारी होगी. One will be lighter and one will be what? Heavier than the other. तो इन दोनों process के लिए हम क्या करते हैं? Winnowing में we use air and sieving we need what? Sieve. Is it clear to everyone? Understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, next sedimentation. Yeah, I know. You don't have to remind me which topic is going on and what I have to teach, okay? Okay, sedimentation. 3 terms are there. Sedimentation, decantation, and filtration. Aeration. Okay? Evaporation. And the last one, evaporation. 3, not 4 terms are there. Okay, all are connected with each other. All are interconnected with each other. Let's see how they are connected and what we have to study in that. Okay, so in this sedimentation, decantation, filtration, we have to take a solution. We have to take a solution for that. Okay, so you know very well solution is formed of what? Solute plus solvent. Okay, Solvent. yes. So with the help of solute and solvent, we have formed a solution. Okay. So let's take one solution, or we can take a mixture and see what is sedimentation. We have taken mud water. Mud plus Water. water. Mud is a solute or a solvent? Mud is what? Ma'am, solute. Yeah. Solute. And water? Water? Vent. Water. Solvent. Solvent. Okay. So we have taken mud water solution in a container. Okay. Mud water solution. Mud water we have taken here in the container. After some time, after putting this solution in a container and let the time passes by, after some time what you will get to see? कुछ समय के बाद क्या होगा? Mud will settle down here. Mud will settle down. So this process of settling down the heavier particle, okay, is what called sedimentation. What is called? Yes, sedimentation. Okay. क्या हुआ? Heavier particle has settled down, and जो हल्का था, पानी से हल्का है, it used to will remain up. Okay. The process of what? Settling down of heavier particle is what called? Sedimentation. Yes, sedimentation. Okay. Now with this sedimentation process, we will move on to decantation process. Let's see what is decantation process. Okay. Now the solution which we have taken here, mud water, what we will do? We will take another container and we will pour this water. हम क्या करेंगे? इसका पानी इसमें डालेंगे. Okay? इसका पानी क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे. तो what will remain here? Mud. Okay? Mud. Yes. So removing of what? Removing of what we are removing? Water. Water. From where? From mud. Is which process? Mud. Which process? Decantation. Yes, very good. Okay. Now if I'll talk about filtration, what is filtration? Anyone? Filtration. Any example regarding filtration? Ma'am, Tea. filter water. Tea. Filter of water. Filtration, you have seen, you all have RO at your home? Yes, For purifying water. That is what? Filtration process is going on inside that machine which you have kept in your kitchen. Okay. So that also is filtration. Afterward, tea. With the help of strainer, you are what? Filtering it. That also is what?
That is also Yes, example of what? filtration. Filtration. ठीक है? Filtration means Ma'am, what? Take a funnel, okay, and mud water. Same thing. What we'll do? We will take here mud water solution, and with the help of funnel, अगर हम डालेंगे तो water will remain here, and mud क्या होगा? इस funnel के अंदर चिपक के रह जाएगा. So this is which process? This is which process? Filtration. Okay. तो filtration में हमने क्या किया? Funnel का use किया, and there we have used, when the school will open, I'll show you filter paper. We are using what? Filter paper, and with the help of that filter paper, we are filtering this water. Okay. The pure water you will get downside, and the impurities will settle where? In this funnel. ये keep जो कहते हैं funnel. In this funnel, it will remain here. Okay. Once again, how many processes are there? Sedimentation, decantation, and then filtration. Okay. Sedimentation means what? Settling of solid particle from the lighter one. Means settling of the heavier particle. Okay. This is what called sedimentation. Here I have taken the example of mud water. In this mud water solution, what will happen? As we'll keep it for some time, mud will settle down and water will remain float above the mud. Okay, water used to float above the mud. What will happen? This is what called sedimentation. Now, after sedimentation, what we'll do? Decantation. Decantation means what? Removing this clean water from this mud, means removing impurities, or removing the pure thing from the impure one, is what called? Is what called? Decantation. Now filtration is just similar to that of decantation, but filtration में हमने क्या use किया है? कोई strainer use करेंगे. Either we are using strainer, or we are using funnel, or we are using filter paper for getting that pure thing. Okay. Tell me one thing. What is evaporation? You have read in class 5th. Evaporation. Stop playing that, please. Okay. Evaporation. Ma'am, question क्या है? What is evaporation? What is evaporation? Ma'am, the process of what is evaporation? Yes, yes. What is evaporation? process of conversion of water into the Water vapor. Yes. called Evaporation. Conversion of water into water vapor. Okay. Conversion of water into what? Water vapor. पानी का भाप बन के उड़ना क्या होता है? Which process? Evaporation. In your book, you get to see like sea water. Sea water is having salt in it. Sea water. Okay, saline होता है, salt present होता है. So when you will remove that water with the help of evaporation, what you will get? You will get salt. Okay. अगर आपने salt water लिया है, if you are taking salt water and you are evaporating it, what will happen? Water क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा. Get evaporated. Okay? And what will remain here? यहाँ क्या बचेगा? Salt. Okay? This is example of what? Evaporation. Okay? You are keeping your clothes to get dry in sunlight. Why you are keeping? For drying it. Which process is going on? तो नहीं कि कपड़ा भगवाना के सुखा के जाते हैं. If you are keeping your clothes in sunlight, it will get dry up. सूख जाता है ना? The help of which process? Evaporation process. Okay? अगर आप धूप में नहीं रखते, घर में भी रखते हैं, तो there also which process goes on? Evaporation process. क्या लगाते हैं? Ma'am,
Yeah, speak up now.